अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस खिलजी और आप देख रहे हैं व्हाट कम नेक्स्ट। तो स्टार्ट वेलकम टू व्हाट कम नेक्स्ट ऑन यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब के हवाले से मटेरियल और लेक्चर मिलते रहेंगे। टू मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको फौरन से मिल जाए। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर और जहांगीर बल्टाइन के कुछ एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। When WhatsApp joined Facebook in, right answer is 2014. Sir Koisji Jahangir Institute of Psychiatry and Behavioral Science is located in, right answer is Hyderabad. The first Catholic president of the United States was John F. Kennedy. यूनाइटेड स्टेट के पहले कैथोलिक प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। मोहम्मद शिया अल सौदानी is the Prime Minister of, right answer is इराक। मोहम्मद शिया अल सौदानी जो है इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं। पाक अरब रिफाइनरी लिमिटेड पार्को is headquartered in, right answer is कराची। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 1974 के अंदर। The director of the movie Joyland is, right answer is Saim Sadiq. Joyland is a Urdu and Punjabi language पाकिस्तानी ड्रामा फिल्म। ये कब रिलीज हुई थी? ये हुई थी 23 मई 2022 के अंदर। The real name of Wazir Khan, after whom Masjid Wazir Khan has been named, was, right answer is Sheikh Alimuddin Ansari. Wazir Khan was the court physician of, right answer is Shah Jahan. Nepal's 239 years old monarchy was abolished in, right answer is 2008. Russia is the world's second largest oil exporter after Saudi Arabia. सऊदी अरबिया के बाद रशिया दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है दुनिया का। The world's largest silicon wafer factory is operated by, right answer is TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. The Hague-based ICJ is also known as the World Court. The ruins at Harappa were excavated by, right answer is Sir Alexander Cunningham. Kuna was the currency of, right answer is Croatia. The kuna was the currency of Croatia from 30 May 1994 until 31st December 2022. It was replaced by the euro in 2023. क्यूना एक क्रोएशिया की करेंसी है जो कि 23 मई 1994 से लेकर
31 दिसंबर 2022 तक थी, लेकिन 2023 के अंदर ये रिप्लेस होकर यूरो में बदल गई। बर्न इज द कैपिटल ऑफ, राइट आंसर इज स्विट्जरलैंड। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। And if you have any query related to this video, don't shy to comment below. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। शुक्रिया।